So starting with the first question, they have asked Newton's law of gravitation को explain करना था. We know that Newton's law of gravitation is सर force वो is पेपर नहीं सॉल्व करना है। directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the scale of distance between them. Okay. The second part was to find out the mass of the object. So हमें सिर्फ इस इक्वेशन को रीअरेंज करना था. Mass would come out to be 4 pi square r cube over g into t square. डेटा में हमारे पास r की वैल्यू एंड वर्सेस टाइम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है. एंड चूंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, हम किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे. आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है यहाँ से. यही ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट ही ले लेते हैं. इसमें इट वुड बी इजी फॉर अस टू पुट द वैल्यू. सो 4 पाई स्क्वायर इनटू आर की वैल्यू 1.2 इंटू 10 to the power 34 divided by G, which is 6.67 into 10 to the power -11 into T, which is 2.4 years है. So into 365 into 24 into 60 into 60. अली अरहम क्या आंसर आया इसका? 3 × 10⁻30। 3 into 10 to the power 30 kilograms. So here we have the value of mass. For the second part, उसने बोला है rock of mass m also is also in orbit around the star and b. The radius of the orbit is r. Explain why the gravitational potential energy of the rock is negative. इसका तो हम वही रीजन दे देंगे ना. Work must be done to bring the object, या रॉक ही कर लेंगे. Work must be done on the rock to move it to infinity or from infinity. Then उसने बोला show that the kinetic energy is equal to this factor. अली क्या फॉर्मूला यूज किया है इसमें? mv² / r². जी, gmm/r² equals to mv²/r का फॉर्मूला यूज कर देंगे. 1/2 से 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को. तो ये 2 इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दिस वुड बिकम 1/2 mv² इक्वल्स टू gmm/2r². हमारी वो इक्वेशन पुट हो जाएगी. सो gmm/r² और एक r इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी विल ओनली हैव 1 r. यही फॉर्मूला यूज किया रहा हम आपने भी. जी ओके. यूज द एक्सप्रेशन टू ड्राइव फॉर द टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? E total equals to potential energy plus kinetic energy. ये हमने वैसे किया भी था. एंड EP किसके इक्वल होता है? -5 इंटू mk. फाइव की वैल्यू क्या होती है? gmm/r इंटू m. सो ये वैल्यू बन जाएगी EP की, उसको स्पेक्ट्रम में पुट कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? gmm/r for EP and gmm/2r. सॉरी, प्लस साइन. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी भी फाइंड आउट की हुई है, which is 2r. अब state the significance of the minus sign in the equation. What does the minus sign indicates? That the acceleration and displacement are in opposite direction. A and x are in opposite direction. Because simple harmonic motion के लिए कौन सी two conditions required होती हैं? कि acceleration should be proportional to displacement and acceleration should always be towards the mean position. Then we have show that the
Resultant force on the trolley at the moment is 0.77. Okay, Ali, what did जी you use for this factor? Let me, F is equal to px, okay, and then for one extension we will do 18 plus 4.8, and for the other sorry, one we'll do 18 minus 4.8. what is the value of K? K is given as 8. और X के लिए आपने एक दफा क्या किया है? पहली दफा ऐड किया 18 प्लस 4.8, ये क्या एक तरफ से वो लेंथ ज्यादा हो जाएगी। 18 plus 1.8 or 4.8? 4.8, Okay, and and then minus this, minus 8 multiplied by 18 minus 4.8 then. okay, for compression and stretching. Yeah. Okay, Yeah, then it comes out to be 0.768, which is 0.77. okay, मुझे Arham. इसकी समझ नहीं आई। F is equals to kx का फॉर्मूला लगा दिया ना, ये एक्सपेंशन का आ गया, ये एक्सटेंशन का ये सेक्शन जो है वो जब वो एक्सपेंड कर रहा है ये उसका आ गया, ये जब वो कंप्रेस हो रहा है ये उस पोर्शन का आ गया, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया और हमारे पास वो आ गया। फिर एक -4.8 + 4.8 क्यों किया? दिस F इक्वल्स टू के एक्स, दोनों में लगा F इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है। क्योंकि x तो दिस इज एक्सटेंशन फॉर द होती है ना। दिस इज फॉर द दिस इज फॉर द कंप्रेशन एंड दिस इज फॉर द एक्सपेंशन। मगर x एक्सटेंशन नहीं होती, इसमें एक्सटेंशन 6 सेंटीमीटर्स है। हाँ, When the trolley is in equilibrium, the length is 18 centimeter, and normally it's 12. तो फिर 6 सेंटीमीटर एक्सटेंशन नहीं है। हाँ तो आपने उसमें ऐड कर दिया ना, इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू के अंदर आपने ये डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दिया उसके अंदर और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओह, ओके ओके ओके, सही है। क्योंकि वो बैक एंड फोर्थ Because it ऑसिलेट कर रही है moves ना। 4.8 extra. हाँ, डिस्प्लेसमेंट है अच्छा। ना, डिस्प्लेसमेंट जो 4.8 होगी वो जब वो एक्सपेंड करेगा 4.8 उसमें ऐड हो जाएगा, एंड सब्ट्रैक्ट हमने कर दिया जब वो कंप्रेस हो रहा है। हाँ, ओके। आपने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था? मैंने ट्राई किया था। ओके, what do we have for the next part is the mass of the trolley is 250. What is the maximum acceleration? So A equals to F over M का formula लगा देंगे। F is 0.77 and mass is 250. Divided by 1000 कर देते हैं इसको। तो mass acceleration की वैल्यू क्या आई एली? 3.1. Meters per second square. So here we have the acceleration 3.1 and yes. Then उसने कहा use your answer in second to determine the period of the subsequent value. For that we'll use the formula A is equals to minus omega square x. यहाँ से A over x would whole under root would come out to be omega. ए की वैल्यू हमारे पास 3.1 है, एक्स की वैल्यू हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या थी फॉर 4.8, तो वो बन जाएगा 0.48 एंड यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 8.04 एंड देन टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे एंड 2 pi over 8.04. This would give us 0.78 second. Ali, did you get the same answer and use the same Yes. same route? Yes. Okay, Arham, were you able to solve part 4? Yeah, Okay, what is the answer to that? it's gonna be the same. Yes, same T, since resultant force is halved and distance is halved.
Distances have? Oh yeah, okay. Same T. Since Ali, what was your answer? ये वाला मुझसे नहीं अच्छा एक्सप्लेन करने फॉर्मूले के साथ। ओके, इसके अंदर से बोला था एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद एन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रॉली व्हिच इज 2.4 सेंटीमीटर, दैट इज हाफ ऑफ द इनिशियल वन। ओके State and explain the effect, if any, this change has on the period of the oscillation. So T is equals to 2 pi, हमने ये फॉर्मूलाज भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 pi by ओमेगा। सो उसने उसकी डिस्प्लेसमेंट को हाफ कर दिया यहाँ की स्टेटमेंट में। ये हम यहाँ पे उसकी डिस्प्लेसमेंट को उसने हाफ कर दिया, उससे पहले उसकी एक्सेलरेशन जो थी, ये हम इसके अंदर डाटा पुट करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट जो है वो डिक्रीज करेगा, जिससे एक्सेलरेशन की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। और यहाँ से जब उसके इसका अगर हम डायरेक्ट इसकी बात करें कि हमने एक्स की वैल्यू को डिक्रीज किया, तो ओमेगा उसकी वजह से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। और ओवरऑल जो हमारे पास रिजल्ट ऑन टी है वो जो है, क्योंकि डिस्टेंस हमने हाफ कर दिया है, सो ओवरऑल वैल्यू जो है रिजल्टेंट फोर्स भी हाफ हो जाएगा, तो हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो वुड रिमेन द सेम। इफ आई टेक यू टू दैट पार्ट वेयर आई एक्सप्लेन टू यू कि जब हम मास स्प्रिंग सिस्टम करते हैं, तो मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर ओमेगा की वैल्यू क्या आती थी, के ओवर एम। हियर इट इज, omega is equals to k over m. So we could clearly see that it is independent of displacement. So if displacement, if we have even disturbed the displacement, it does not affect the time period at all. Until unless it's spring constant or mass, there would be no effect on the time period. तो हम फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हैं Sorry? to prove it. So we can't use the formula to prove it because We can do this, but 0.024. when we have the easier approach, keeping the omega thing in our mind, the what we have discussed so far. So again, I told you that the reason of revising everything is that we could reach out to the shorter ways to get to our answers. Okay, Yeah. Ali, is it clear at your end? To find out the gravitational field strength, इसकी definition हमें पता है, G is equals to force per unit, mass का formula लग जाएगा इसके अंदर, and then उसने हमें radius calculate करने को बोला है। क्या formula यूज किया अली? G/m/r² = mr/omega²। Exactly, gmm over r square is equals to mr omega square। तो एक r इससे कैंसिल आउट हो जाएगा एंड एक m इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड विल बी लेफ्ट विद जी एम ओवर ओमेगा स्क्वायर। डू वी हैव द एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन? टाइम पीरियड है 2 pi over t लगा दें। 2 पाई ओवर टी का फॉर्मूला लगा के हम लोग पहले वो फाइंड आउट करेंगे क्या निकली थी ओमेगा की वैल्यू। मैंने तो डिफरेंट फॉर्मूला यूज किया। आर अली, क्यूब आपने निकालनी ओमेगा थी की ना क्या पहले। वैल्यू निकाली है? ओमेगा 2 पाई/94 × 60 का यस। स्क्वायर। What was your answer anyway? If you went this with this approach, what formulas did you used? I used r³ = gm/omega²। You went for a different formula? नो सेम वन, r³ पहले फाइंड आउट यानी कि वो r मल्टीप्लाई आगे था। Okay.
And then I found the value of R cube first using GM over omega square. Omega की value 2 pi over 9460 whole square. हाँ, And so then I that's what just I'm asking now. What used did you get for this vector? एक फिर मैंने directly वो सॉरी, मास ऑफ अर्थ यहाँ पे यूज करना है, वो हमने कैंसिल कर दिया था। Aram, you didn't solve this question as well? नहीं हो गया था। आई थिंक ये हमने क्वेश्चंस पहले भी किए हैं। No. सॉरी। Okay, what is the answer for this one? इन सारों का इसका क्यूब रूट आ जाएगा। What was your final answer? 6.9 times 10 power 6. Okay, and what approach did you use? मैंने भी Aram, you यही said you किया were है। The thing you you were using a just different put right approach. now. Huh? The thing you put on the screen, that's what I use. Okay. Anyhow, उसने ऐसे प्रूव करने को बोला था, you had the same state with the reason whether the gravitational potential energy of the satellite increases or decreases. Increases. I got further. Yes. Oh, I skipped that, the second part. Sure. The new orbit. Okay. Determine the magnitude of the change in the gravitational potential energy. 1.9 times 10 power minus 11. Okay. Ten power 10 10 per आपने क्या 10 बोला? minus 11. -11? -11 तो नहीं होगा। एक मिनट। अली? जी मेरा 10 per 10 निकला 1.85 into 10 per 10। हाँ, क्योंकि इसमें वो वाला फॉर्मूला लगे ना, GMM into 1 minus R2 minus 1 over R1. हाँ अच्छा। हाँ 6.67 to the power मैंने -11 into 6 into 10 to the power 24 into 1200 into 1 over 6.9 into 10 to the power 6 minus 1 over 9.4 into 10 to the power 6. So we'll get 1.9. Then we have state what is meant by simple harmonic motion. In wait, so which, isn't R2 9.4 times 10 power 6? yes, that's what I've written. And you said R2 minus R1? Minimum वो minimum minus maximum करते हैं। Okay. R1 minus R2 का फॉर्मूला होता है मेरे पास। वो मैंने accidentally written R2 minus R1. R1 minus R2 होता है। Say नहीं, उसने आगे 2 ही लिखा हुआ था, उसमें वो मिस्टेक हो गई थी। Then there was this proof of the formula. हाँ जी अली, क्या फॉर्मूला यूज किया था? प्रूव नहीं करना, फ्रीक्वेंसी निकालना सॉरी, उसने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने को बोला हुआ सिंपली। जी। 2 k over m is 2.8. equal to omega square। सॉरी, 2 ए k over इज m इक्वल्स टू is equal माइनस to omega ओमेगा square। स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यूज कर देंगे, उसको उसके साथ कंपेयर कर देंगे। 2k/m इंटू एक्स से एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओमेगा वुड कम आउट टू बी 2k/m एंड ओमेगा फर्दर ऑन जो है वो 2πf के इक्वल होता है। तो हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो उसको पुट कर देंगे वहां पर। क्या आंसर निकला? 2.8. 2.8. And for C first part, oscillation of the oscillators where keep its amplitude and oscillation constant amplitude oscillation is seen to vary in amplitudes at maximum. What is the process?
What do we call this process? Resonance. Yes, and oscillators supply at any given frequency, the amplitude of the oscillation of the trolley is constant. Explain how this indicates that there are resistive forces opposing the motion of the trolley. Ali. नहीं ये वाला मुझे नहीं पता. उसने बोला at any given frequency, the amplitude of the oscillation of the trolley is constant. Explain how this indicates that there is a resistive forces opposing the motion. We are continuously giving a force to it. ठीक है? Supply तो continuously हो रही है, कुछ driven harmonic oscillator है. Oscillator is complete. Oscillator is supplying the energy continuously, whereas energy of the supply, whereas energy of the trolley is still constant. So energy must be being dissipated somewhere. That's how we would know that resistive forces are present. Okay. So, in this part, he has told us that the period has increased to 150. So we would use the same formula, r cube equals to gm over omega, which is 2 pi by t square. So we'll put the value 6.67 10 to the power minus 11. For mass, we'll put 6 into 10 to the power 24 divided by 2 pi. This time the time is 150, so 150 times 60 whole square, and the whole will be cube root because we need to find the value of r. So it would come out to be 9.4 into 10 to the power 6 meter, and they have given us the same value, hence proven that we have get the value. Okay, that's it for today.